अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ स्किल क्लास 1 की बुक को। लेट्स स्टार्ट टू रीड इट। टुडे वी रीड यूनिट नंबर 4, कंपैरिजन बिटवीन नंबर, पेज नंबर 25, कंपैरिजन बिटवीन नंबर्स। सो द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन बिटवीन नंबर इज दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन करना, दो नंबर्स के दरमियान फ़र्क करना। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 26, यूनिट नंबर 4, लेस देन, मोर देन और इक्वल्स टू। लेस देन थोड़ा, मोर देन ज़्यादा और इक्वल्स टू या बराबर, इक्वल्स टू बराबर। To compare objects by using the word less than, more than or equals to. Worksheet. Count and compare the following groups of objects by using words less than, more than or equals to. तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी इन ऑब्जेक्ट्स को, अपनी इन चीज़ों को काउंट करेंगे और बताएंगे कि ये एक दूसरे से लेस हैं, मोर हैं या इक्वल हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। So what is this, students? This is a ball. So let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is 12 balls. This is 12 balls. Okay. Now count this side of ball. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is 9 ball. This is 12 ball and this is 9 ball. So students, this ball, this side is more than this side. ये वाली side इस side से ज़्यादा है, तो हम इधर लिखेंगे more than, because ये ball इन ball से ज़्यादा है। तो आइए आगे देखते हैं। What is this, students? This is shoe. So let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. This is 18 shoes. Let's count this side of shoes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. This is 21 shoes. So this side of shoe is less than this side. Okay? So we write less than. Now count this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. And now count this side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So this side is less than this side. Okay, students? Come to the next. What is this, student? This is flower. To count these flower and count these flower. So we conclude that this side is more than this side. Okay, students? And same like these two questions, you can count these apples and this side of apple and this side of chicks and this side of chicks and conclude that this side of apples equals to this side of apples and this side of chicks more than this side of chicks. Okay, students? More than ज़्यादा, less than कम, equals to बराबर। तो ये था आपका पेज नंबर 26. Let's move to page number 27. In page number 27, unit number 4, greater than. Greater than mean ज़्यादा. Okay students, the sign of greater than का sign बिल्कुल एक crocodile के मुंह की तरह होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि क्रोकोडाइल का फेस अगर इस साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा, तो उसका मतलब है कि वो ग्रेटर देन है, और अगर क्रोकोडाइल का फेस लेफ्ट साइड पे होगा तो इट्स मीन लेस देन। The crocodile is very hungry. He wants to eat more fish. The crocodile opened his mouth toward more fish. तो crocodile उस तरफ मुंह करता है जहां ज्यादा फिश है। तो जिस साइड पे ज्यादा चीजें होंगी, crocodile उस साइड पे आएगा। Like 8 is greater than 3. 8 fishes greater than 3. So crocodile face is 8. Crocodile face is in the side of 8. Okay students, let's move to the next page.
Page number 28. Unit number 4, less than. In less than, crocodile face is on left side. The crocodile is very hungry. He wants to eat more fishes. The crocodile opened his mouth toward more fishes. Okay, student, in this side there are 3 fishes and in this side there are 8 fishes. So the crocodile mouth is on left side. 3 is less than 8. 3 is less than 8. Okay, come to the exercise. Page number 29, unit number 4, less than or greater than. Write the word less than, greater than, equals to with the symbols. Symbol less than, greater than, equals to at a suitable place. 4 is less than 8. 4 is less than 8. तो बच्चों देखो 4 लेस देन है 8 से, तो हम इसका लेस देन का साइन 8 की तरफ लगाएंगे. क्रोकोडाइल का फेस 8 की तरफ आएगा. क्यों? क्योंकि 8 ज्यादा है. जो ज्यादा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, क्रोकोडाइल का फेस उसकी तरफ आएगा. जैसे इधर 4 छोटा है, 8 बड़ा है, तो हमारा क्रोकोडाइल का जो माउथ है वो 8 की तरफ आएगा. लेट मूव टू द नेक्स्ट. 5 इज ग्रेटर देन 2. सो नाउ स्टूडेंट टेल मी which side is greater, 5 or 2? Yes, 5. 5 is greater than 2. So crocodile का face 5 की तरफ आएगा. 3 is equal to 3. 3 is equals to 3. जब equal हो, दोनों चीजें एक equal हो, बराबर हो, तो हम equal का साइन लगाएंगे. Okay? 28 is greater than 18. 28 18 से बड़ा है, तो crocodile का face 28 की तरफ आएगा. साथ हम इधर राइट करेंगे greater than. 36 is 42. अब बताएं बच्चों 36 बड़ा है या 42? Yes, 42. तो 42 की तरफ हमारा क्रोकोडाइल का फेस आएगा और इधर आएगा लेस देन. 19 is equals to 19. तो इधर आएगा equals to का साइन. 73 is greater than 68. 73 is greater than 68. So the crocodile face आएगा 73 की तरफ. 98 is greater than 76. तो क्रोकोडाइल का फेस किसकी तरफ आएगा? 98 की तरफ. 98 greater than 76. 41 is greater than 39. So क्रोकोडाइल का फेस आएगा 41 की तरफ, क्योंकि 39 41 से छोटा है. 41 बड़ा है, तो क्रोकोडाइल का फेस 41 की तरफ आएगा. 65 is less than 80. 65 less than 80. 91 is greater than 71. 91 greater than 71. 21 is less than 37. 29 less than 37. 37 is greater than 29. So crocodile face is move on 37. 31 is equals to 31. 31 31 के equal है, तो इधर आएगा equal का sign. Okay student, let's move to the next page. Page number 30. Unit number 4, less than or greater than. Fill in the blank spaces by using the following symbol. Less than, equals to, greater than. Let's solve it. Okay students, अब हम इसे मिलकर solve करेंगे. 31 and 13 and 31. So student, tell me which side is greater, 13 or 31? Yes, 31. So the crocodile face is moved to 31. Okay, now next 53, 74. 74 is greater, so crocodile mouth is on left side. 59 and 79. 79 is greater, so crocodile face is again left side. 64 and 45. 64 is greater, so 64. 77 and 88. So the crocodile face is going to move in 88. 8 and 6. 8 is greater, so greater than. 19 and 29. So 19 is less than 29. 40 and 45. 40 is less than 45. 70 and 82. 70 is less than 82. 82, 93. 82 less than 93. 8 and 8. So students, 8 is equals to 8. 90 and 89. 90 is greater than 89. 36 and 19. 36 is greater than 19. 75 and 49. 75 is greater than 49.
37 is equals to 37. 77 and 69. 77 is greater than 69. 97 and 66. 97 is greater than 66. 35 and 29. 35 is greater than 29. 28 and 34. 28 is less than 34. 6 and 4. 6 greater than 4. 99 and 100. 99 less than 100. 50 is equals to 50. 58 is less than, 58 is greater than 47. Okay. 81 is equals to 88. So students, this is your page number 30 which we solve. Now comes to the page number 31. In 31, what concept of before, after and between? Before पहले, after बाद में, and between दरमियान में. Okay, what comes before? पहले क्या आता है? What comes before 14? What comes before 38? What comes before 71? What's come before 89? So let's solve it. What's come before 14? 14 से पहले क्या आता है? 13. तो इधर है 13 comes before 14. What comes before 38? 37 comes before 38. What comes before 71? So students, now tell me what's come before 71? Yes, 70. 70 come before 71. What comes before 89? Yes, 88. 88 comes before 89. What comes after? बाद में क्या है? बाद में क्या आता है? What comes before 17? 17 के बाद में क्या आता है? 18s come before 17. 18s 17 के बाद आता है. What comes after 40? 40 के बाद क्या आता है? 41 comes after 40. Now you tell me students, what's come after 69? Yes, 70. 70 comes after 69. What's come after 88? Yes, 89. 89 comes after 88. What's come between? Between दरमियान में. दरमियान में क्या आएगा? आइए अब हम ये देखते हैं. 8 and 10. 8 and 10 के दरमियान में क्या आएगा? 9. 23 and 25. 23. 24, 25. 58, 60, 58, 59. 87, 88. 18, 19. 39, 40. 72, 73. 95, 96. Okay student, this is the concept of before, after and between. Now come to the page number 32. In page number 32, the concept of before, after and between. Write the number that's come before, after and between the given number. So before 24, 24, 23, 22. Very good. 49. 49 से पहले क्या आएगा? 48. Okay students, let's move to the next page. Page number 32. Concept of before, after and between. Write the number that comes before, after and between the given number. Before 24. 24 से पहले क्या आता है बच्चों? 23. Very good. 49, 48, 84, 83, 66, 65, 62, 61, 79, 78, 2, 1, 56, 55, 71, 70, 88, 87, 17, 16, 29, 28. वेरी गुड. तो ये वो नंबर्स थे जो पहले आते हैं. नाउ कम टू आफ्टर वर्ड नंबर. आफ्टर बाद वाले. 18. 18 के बाद क्या आएगा? 19. 49, 50, 91, 92, 76, 77, 67, 68, 39, 40, 89,
90, 77, 78, 27, 28, 32, 33, 45, 46, 21, 22. So these are after number. Now move to between numbers. 90, 21, 90, 20, 21, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 20, 20, 23, 24, 6, 7, 8, 37, 38, 39, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 88, 89, 90, 97, 98, 99, 69, 70, 71, 79, 80 and 81. So these are your comes after, before, after and between numbers. Now move to the page number 33. The greatest and the smallest number. Take the greatest number in each pair. First has been done for you. 16 and 17. So students 16 और 17 में greater number क्या है? 17. So we take it. 21, 19, 14 and 16. So the greater number is 21. 30, 32, 44, 42, 23, 25. 30, 32. The greatest number is 32. 44, 42. The greatest number is 44. 23 and 25. The greatest number is 25. 50, 59. The greatest number is 50. 3, 5. The greatest number is 5. 81, 85. The greatest number is 85. 9, 10. So students, tell me which is the greatest, 9 or 10? Yes, 10. Let's move to the next step. Take the smallest number in each pair. First has been done for you. 11, 9. So the smallest number is 9. 29, 28. The smallest number is 28. 36, 38. So छोटा number कौन सा है, 36 या 38? 36. 26, 27. So the smallest number is 26. 7, 5. The smallest number is 5. 23, 22. The smallest number is 22. 18, 17. The smallest number is 17. 27, 24. The smallest number is 24. 78, 89. The smallest number is 78. 43, 33. The smallest number is 33. Okay student, let's move to the page number 34. So in page number 34, to identify the greatest and the smallest number from a given group of numbers. So you see the worksheet, these are some numbers. The smallest number is, so students आप ये फ्लावर देख रही हैं जिसमें numbers लिखे हुए हैं, तो आपने बताना है इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 19. So 19 is the smallest number. The greatest number is, अब बताएं मुझे कि greatest number सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? Yes, 54. So we write 54 is the greatest number. Color the smallest number red and the greatest number blue in the following group of number. So students, आपने जो greatest number होगा उस पर red color, blue color करना है, और जो smallest मतलब छोटा number होगा उस पर आपने red color करना है. तो आइए देखते हैं. 8, 17, 4, 25, 11, 21, 33 and 14. So the smallest number is 4 and the greatest number is 14. So we color red in 4 and the color blue in 40. Same like हम बाकी exercise को भी करेंगे. 12 is smallest number and 50 is greatest number. 26 is smallest number and 71 is greatest number. 15 is smallest number and 80 is greatest number. Let's move to the next page, page number 35. Ascending and descending order. Ascending छोटे से बड़े की तरफ, descending बड़े से छोटे की तरफ. Increasing order is called ascending order. In ascending order, the smallest number comes first, the greatest number comes at the end. Ascending number वो नंबर होते हैं जो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं. Ascending order छोटे नंबर से स्टार्ट होता है और ये खत्म बड़े नंबर पे होता है. Descending order क्या होते हैं? Descending order is called, decreasing order is called descending order. In descending order, the greatest number comes first, the smallest number come at the end.
डिसेंडिंग ऑर्डर में जो बड़ा नंबर और बड़े नंबर से स्टार्ट होता है और छोटे नंबर पे खत्म हो जाता है। तो आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। 7, 15, 6, 8, 9। इन असेंडिंग ऑर्डर वी स्टार्टेड विद, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 15। आइए इसके क्वेश्चन करते हैं। 41, 39, 70, 48, 26। तो स्टूडेंट्स इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 26। तो हम इधर लिख देंगे 26। 26 के बाद 41, तो हम इधर लिख देंगे 41, 39। 39 के बाद 41, 41 के बाद 48 और 48 के बाद 70। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ गया है। तो आइए अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर को देखते हैं। 40, 29, 25, 19 एंड 12। सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 36, देन 84, देन 25, 12, 19, 40 and 29. So greatest number is 40, then 29, then 25, then 19 and the smallest number is 12. So let's move to the exercise. 92, 84, 71, 50 and 36. This is your ascending and descending order. Let's move to the next page, page number 36. Ascending and descending order. Write the following group of number in ascending and descending order. Ascending order: 56, 26, 21, 12, 42, 15, 36 and 27. Ascending order वो orders हैं जो छोटी word नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। तो इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर 12 है, उससे बड़ा 15, then 21, then 26, then 27, 36, 42 and the last one is 56. Now come to the next. 14, 17, 18, 20, 32, 41, 49, 55. The smallest number is 14 and the greatest number is 55. 7, 10, 19, 27, 32, 51, 86, 19. The smallest number is 7 and the greatest number is 90. 11, 27, 35, 39, 44, 58, 65 and 89. We arrange it in ascending order where 89 is the greatest number and 11 is the smallest number. Now move on descending order. Descending order वो orders हैं जो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। तो इस arrangement में सबसे बड़ा नंबर है 76, 76 से छोटा 69, फिर 59, फिर 53, then 50, 39, 30 and 21. Come to the question number 2. The greatest number is 56. 56, then 52, 51, 40, 37, 31, 28 and 24. 88, 66, 57, 48, 42, 39, 25 and 19. And the last question is 97, 91, 51, 47, 21, 19, 13 and 9. Okay students, this is your unit number 4. Comparison between numbers. I hope you understand it very well. This is your math scale book for class 1. I hope you understand it very well. See you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।